morning, dear students. Myself Arvinder. Today we will discuss our oxidation reduction practical, that is to prepare approximately 0.1 normal potassium permanganate, that is KMnO4, and to standardize it. We need some apparatus, that is analytical balance, weights, fractal weights, along with burette, pipette, volumetric flask, conical flask, measuring cylinder, etc. We need particularly some chemicals like KMnO4, distilled water, sodium oxalate and sulfuric acid, etc. For this practical particularly, before starting the practical, we need to discuss that what is your redox titrations. Redox, it is a combination of two words basically. Red means reduction, ox means oxidation. What is reduction? Reduction, you need to learn or remember one thing, that is GEO. That is, if there is a gain of electron, it means reduction is happening. On the other hand, in the oxidation, that is LEO, that is loss of electron. In the reduction, there is a gain of hydrogen. On the other hand, in the oxidation, there is a loss of hydrogen. In the reduction, there is a loss of oxygen, along with there is a decrease in the oxidation number, while on the other hand, in the oxidation, there is a gain of oxygen, means there is an addition of oxygen and there is an increase in oxidation number. Oxidation number is used to determine the valency of the compound. In simple terms, you just need to remember two words, that is OA stand for oxidizing agent. Oxidizing agent always undergo reduction. It is like vice versa. Oxidizing agent undergo reduction, that is reduction means that it is gaining electrons. While your reducing agent, that is RA, it undergo oxidation, that is it loses electrons. Now we will discuss, there are some calculations. As we know, N1V1 is equal to N2V2. Here N1 is the normality of your sodium oxalate. As we know, KMnO4 is not a primary standard, so we need to standardize it using some primary standard. We need sodium oxalate instead of our oxalic acid because it is 99.95% pure compound. So we use sodium oxalate instead of our oxalic acid. You can also use oxalic acid. Here N1, that is normality of your standard, weight of sodium oxalate in gram per liter upon equivalent weight of sodium oxalate. Here equivalent weight of your sodium oxalate is 134 upon 2. Here your equivalent weight is 67. So if you dissolve 67 gram in 1000 ml, it will give your one normal solution. If you dissolve 6.5 gram in 1000 ml, it will give 0.1 normal of solution. So we need less sample. So I am dissolving only 1.7 gram in 250 ml of water, and it will also give your 0.1 normal of solution. So here this is your 1.7 अपॉन वॉल्यूम कितना लिया हमने 250 इनटू क्या आ जाएगा मेरा ग्राम पर लीटर 1000 अपॉन दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, द रिक्वायर्ड जो हमारी नॉर्मलिटी निकल के आती है, दैट इज 0.10 नॉर्मल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल. नेक्स्ट, this is like in the redox reaction, one is a oxidizing agent and other is a reducing agent. As we know, the KMnO4 solution is a strong oxidizing agent. So we need to dissolve or titrate against our sodium oxalate, which is a reducing agent. So we need to dissolve it
acidic media. As we know, our KMnO4 dissolve differently in different media. Like first we read in the basic medium what happens. When this is your KMnO4, it will dissolve into K positive plus MnO4 negative. Then MnO4 negative, it will gain electron in the basic medium and it changes into magnet ions that are MnO4. Means it is gaining electrons. इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं मीन्स क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. मीन्स दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट अंडरगो रिडक्शन. मीन्स यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रही है बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. वाई इन द न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, योर MnO4 नेगेटिव इट gains your 3 electrons and changes into MnO2, that is manganese dioxide. It is dark brown in color, along with there is a formation of water. So you need to balance the hydrogens. So here you put 4 hydrogens. On the third medium, that is your acidic medium, MnO4 negative ions will gain 5 electrons. Means it is again getting reduced. It will change into your manganese ions that are Mn2 positive. Along with there is a formation of molecule of water. You need to balance the hydrogens on both sides. See, according to gain of electrons, we can calculate the equivalent weight in the case of our oxidizing agent and reducing agent. In the case of redox reaction, the equivalent weight is equal to molecular weight upon number of electron transfer. Number of electron transfers. For example, if I am calculating equivalent weight of oxidizing agent, here you put molecular weight upon number of electron transferred per oxidizing agent. If I am taking here equivalent weight of your reducing agent, so यहाँ पे क्या आ जाएंगे, number of electron transferred per reducing agent. जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आए. फॉर एग्जाम्पल, see, in the case of your basic medium, the equivalent weight of your KMnO4 is 158.03. In the basic medium, there is only transfer of 1 electron, means it is gaining only 1 electron. So यहाँ पे आपका equivalent weight क्या हो जाएगा, 158 upon 1. So it is equal to 158. See, in the case of neutral medium, it gains 3 electrons, so 158 upon 3 is equal to 52.67. In the case of acidic medium, we need 5 electrons. See, there is a transfer of 5 electrons. Here, 158 upon 5. 5 हो गया, ठीक है. यहाँ पे आपका जो वेट निकल के आता है, that is 32. Now 32 gram, when we dissolve 32 gram of KMnO4 in 1000 ml, it will give your 1 normal solution. When we dissolve 3.2 gram in 1000 ml, it will give your 0.1 normal. We need less sample in the lab, so I am dissolving 1.6 gram of KMnO4 in 500 ml of solution, and it will give your 0.1 normal of solution. Clear? Reduction में क्या होता है? There is a decrease in oxidation number. How you can calculate your oxidation number? I can show you one example. Suppose यहाँ पे क्या है, मेरा MnO4 नेगेटिव है. See, if you want to find
सी, अगर आपने इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज हियर आर सम रूल्स, वो हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। इफ मेरे पास कोई भी कंपाउंड है तो देन जितना भी उसका मैंने निकालना होता है इज इक्वल टू 0 आता होता है, ठीक है। अगर मेरे पास केटाइंस है तो टोटल जो इक्वल करते हैं हम, दैट इज अकॉर्डिंग टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास एनाइन है, ठीक है, सपोज दिस इज योर एनाइन, ठीक है, तो वहां पे जितना उसका चार्ज होता है उसमें के वो इक्वल हो जाता है। सपोज दिस इज योर मैग्नीस, ठीक है, इसको मैं x कर रही हूं, x, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा मेरा ऑक्सीजन। एज यू नो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दैट इज -2, कितने हैं इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। सी टोटल चार्ज यहाँ पे -1 है, नेगेटिव चार्ज आपका 1 है, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा x आ गया, 4 इंटू 2 8, माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -1। सी x इज इक्वल टू, जब 8 उधर जाएगा इट विल चेंज इंटू योर +7। सी यहाँ पे जो आपकी स्टेट थी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर था वो कितना था +7। तो इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिंपली यू कैन सी +7 से मेरी स्टेट कहां पे पहुंच गई है +2 में, मीन्स इट इज गेटिंग रिड्यूस, वहां पे क्या है उसकी रिडक्शन हो रही है। नाउ N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 हमने फाइंड आउट कर लिया है, मीन्स मेरे सोडियम ऑक्सलेट की क्या है नॉर्मेलिटी। देन V1 क्या आ जाएगा मेरा, V1 दिस इज द योर वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, दैट इज वी टेक इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस द सैंपल, और ठीक है जितना भी हम वॉल्यूम लेते हैं सोडियम ऑक्सलेट का कोनिकल फ्लास्क में आफ्टर एडिंग H2SO4। Why we add H2SO4 in the sample? Because we need much hydrogen ions। ठीक है, यहाँ पे क्या है बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को मेरे को क्या है हाइड्रोजन आयंस एक्सेस में चाहिए, तो जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है हमें H आयंस प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विथ इट इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है स्टेबल रहता है रिएक्शन में, कोई भी अपना इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। देन V2 क्या आ जाएगा मेरा, जितनी भी मेरी प्यूरिट की रीडिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पे ब्यूरिट में हम क्या लेंगे KMnO4 का सोल्यूशन, तो ब्यूरिट की रीडिंग का जो मीन आएगा वी विल टेक, ठीक है, V2। देन N2 दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 which we need to be calculated। क्लियर है? Then let's start with the calculation। In the initial reading you will quote 0 here, in the final reading that is the volume that you obtained after your reaction, after your titration, then here you quote the volume used। One thing I want to मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कलरेशन, डार्क कलरेशन ऑफ योर KMnO4, उसकी वजह से जो KMnO4 है इट विल एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बाहर से कोई भी इंडिकेटर डालना नहीं पड़ेगा, हम क्या है सीधा ही ऊपर से KMnO4 को ऐड करेंगे हमारे सोडियम ऑक्सलेट में, एंड देयर इज अ, ठीक है, एंड पॉइंट पे हमें पिंक कलर शो हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर KMnO4 सोल्यूशन। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। See, your temperature is 60. We need to stable the temperature first, then we start the titration।
we need to add the KMnO4 solution in the conical flask slowly, and my burette was set on 0. So initial reading is 0. After titration we will note the burette reading. Initially you can increase the flow, but in the meantime you need to add slowly. See, this is your permanent pink color, and my reading is, this is your 28.2. See, temperature is again 60 second times, and we will start the practical again. See, there is a reflection of pink color. See, this is my permanent pink color. And my reading is 26.6. 26.6. See, my initial reading, first reading was 0 and final reading was 28.2. So volume use क्या आ जाएगा मेरा 28.2. Similarly, second reading was at 26.6. So volume use is 26.67. See, temperature is again 60. So now we will again start our titration. See, my burette is approximately set on 0. It is 0.1 more, so we can deduct afterwards. Start my titration. In the conical flask, I have 25 ml of sodium oxalate solution along with 5 ml of concentrated sulfuric acid. We are adding sulfuric acid for providing acidic medium for the reaction. This is the correct procedure of holding. With the one hand you need to operate the knob, and with one hand you need to shake your conical flask. See, this is your permanent pink color, and my reading is 25. वो पॉइंट पहले हमारे पास ज़्यादा था तो इसलिए हम उसमें ऐड कर रहे हैं. इट इज़ योर एग्जैक्ट 25 नाउ. सी, दिस इज एग्जैक्ट 25 नाउ. माई थर्ड रीडिंग इज 25. सो वॉल्यूम यूज क्या आ जाएगा मेरा 25 ml. नाउ आई विल टेक मी. So here I am rubbing
So we will take mean, that is 28.2 plus 26.6 plus 25 divided by 3. This is your is 79.8 divided by 3. This is approximately 26.6. So according to our N1 V1 is equal to N2 V2. Our N2, that is we need to calculate the normality of KMnO4. N1 V1 upon क्या आ जाएगा मेरा V2. Here normality of your sodium oxalate is 0.1 into V1 क्या आ जाएगा मेरा 25. Here V2, that is your volume of burette. ठीक है, burette reading उसका मीन है वो क्या आ जाएगा 26.6. Here it is your 2.5 divided by 26.6. Now you can calculate again. 2.5 divided by 26. This is your 0.09 normal. See, this is not exact 0.1 normal. Your reported normality is 0.09 normal. In the result, you have to quote that normality of prepared 0.1 normal KMnO4 solution in the laboratory is found to be 0.09 normal. Thank you, students.